मैम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल तो पोलन ग्रेन ही है बेटा, कौन बना रहा है? मैं तुम्हें थोड़ा सा देती हूँ, आराम से देखो। दैट इज स्टेमन या पिस्टिल, पहले बताइए। स्टेमन। स्टेमन में कौन सा पार्ट बनाता है, फिलामेंट की एंथर? फिलामेंट। फिलामेंट। अब मुझे एक चीज बतानी है जो मैं आपको कर रही हूँ। नाउ टेल मी, जल्दी से मुझे बता दो भूमि, कि इसमें से फिलामेंट कौन सा है और एंथर कौन सा है, ए क्या है बी क्या है? मैम ए फिलामेंट है, बी। बी एंथर है। बी मैम फिलामेंट है, ए एंथर है। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा बैठो, वेरी गुड। इसको नहीं पता वो बनाते जाना है। नेक्स्ट आ जाता है 10th बी, कोमलप्रीत कौर। 10th बी, कोमलप्रीत कौर। यस जल्दी से बताओ, ये क्या है, मेल पार्ट है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? मैम, फीमेल। दिस इज फीमेल। क्या कहते हैं इसको? कोई और नहीं, ओनली शी विल टेल। यस, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? मैम किसको दिस पिक्चर इज कॉल्ड एज। है? दोबारा से मैं पूछूं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, आई एम गिविंग द ऑप्शंस, स्टेमन, सेपल, पेटल, पिस्टल। स्टेमन। स्टेमन मेल होता है कि फीमेल होता है? मैम आई डोंट नो। बेटा कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो? आई थिंक 5th क्लास से ये चीजें पढ़ रहे हो। ध्यान से ध्यान से, अब यही रुको। आपके साथ ही फर्स्ट बेंच पे बॉय है, मिडल वाला, वो बताएगा और आपने देखना है ना? ऑन ही रखो, माइक ऑफ मत करो। हाँ जी बेटा, खड़े हो जाओ और बताओ, यस व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? Ma'am, it is called as stamen, दिस इज स्टेमन। and below one is ovary. ये सारा स्टेमन है और ये ओवरी है बेटा। का मतलब मैं आज ये सोच के आई थी, मतलब मैंने 1 मिनट में कराना है और काम खत्म करना है, बट यहाँ तो मुझे दिख ही कुछ और रहा है। बैठो, बोथ ऑफ यू गो। ध्यान से सुनो बेटा, स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर बनाओ, रट्टा मत मारो। 10th क्लास है, 7th में तुम पढ़ के आए हो, 5th में तुम पढ़ के आए हो इसको। है? ध्यान से इधर देखो, स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक, कि दिस इज स्टेमन। दोबारा से देखो, दोबारा से हमें काम करना पड़ रहा है, बट अगर ध्यान से करोगे नो प्रॉब्लम। दिस इज, ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये फ्लावर है। फ्लावर का हम बनाते हैं, ये जो फ्लावर की स्टॉक होती है, इसका जो टिप है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। डायग्राम बनाओगे तो क्लैरिटी होगी। थैलेमस के बाद दिस इज, सबसे बाहर ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स है, दैट इज सेपल्स। दिख रहे हैं ग्रीन कलर? दैट आर सेपल्स, राइट? उसके बाद इनर टू दिस देयर आर प्रेजेंट पेटल्स। देन नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद, ये देखिए, ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बेटा 6 महीने बाद भी याद होना चाहिए। इफ यू ड्रॉ इट यू विल रिमेंबर इट। दीज आर स्टेमन्स, एंड देन इनसाइड देयर इज प्रेजेंट एयर। दिस इज पिस्टिल। ये पिस्टिल है। पिस्टिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल। सेपल्स, petals, stamens, and this whole structure is pistil. बनाओ एवरीबडी, जिसको पता है वो भी बना लो। क्या है, हाथ चल जाएंगे, एक्टिव हो जाओगे।
Everybody, ma'am, please see. ठीक है, तो दिस इज, ये जो है, ये ध्यान से देखो, दिस इज पिस्टल, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल. पिस्टल और कार्पल. This part is stigma. Style. Ovary. Pistil और carpel is फीमेल. ये साइन फीमेल का है, जिसको नहीं पता ब्रैकेट में लिखना फीमेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. Inside the ovary there are present ovules. एक भी ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. These are ovules. Everybody draw. जितना ड्रॉ करोगे, कुछ नहीं लग रहा, बैठना तो है ही है हमने यहाँ पे. या तो सुन के काम कर लो या घर जाके रट्टे लगाओ. ठीक है, इसको लेबल करो. दिस इज थैलेमस, जो स्टॉक है. दिस इज सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड pistil. This stamen, it is male. क्या नाम है इसका? मेल. रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ध्यान से अपने मन में रिवाइज करो 2 बार 3 बार. And stamen has only 2 parts, that is anther and filament. ठीक है बेटा, चले आगे. Then the anther produce, लिखो जरा पॉइंट. Anther produce pollen grains. Anther produce pollen grains. Pollen grains reach the stigma.
and the process is called as, yes, जल्दी से बताइए, साक्षी शर्मा, 10th C, 10th C, साक्षी, साक्षी नहीं है 10th C में, ओके, हाँ जी साक्षी, टेल मी, what is this process called as? Reaching. Pollination. This is called as pollination. Very good. Now, Sakshi, you will tell me E. हमने कहा एंथर फॉर्म पोलन ग्रेन्स. Everybody write questions. Which structure form sperms, या आपकी बुक में जो लिखा हुआ है that is, sorry, male germ cells, or you can say male gametes. Which structure? Write down the question and I am giving you options also. इधर देखिए, सिंपल स्टेमन लिखा है, या पिस्टिल लिखा है, या एंथर लिखा है, या फिर पोलन ग्रेन्स है. इसमें सबसे करेक्ट आंसर क्या है? हाँ जी साक्षी. Anther. बेटा देखो, एंथर ने तो पोलन ग्रेन्स बनाए, और पोलन ग्रेन्स में क्या बने? मेल गैमीट्स. लिखो ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आई? बैठो बैठो. एंथर ने तो पोलन ग्रेन्स बनाए. सो विच स्ट्रक्चर फॉर्म स्पर्म्स और मेल जर्म सेल्स और मेल गैमीट्स? आगे लिखो पोलन ग्रेन्स. स्पेसिफिक है. है ना? यहाँ पे स्टेमन भी ठीक है वैसे तो, एंथर भी ठीक है, अभी बनते तो इन्होंने ही है, मेल स्ट्रक्चर तो यही है, बट स्पेसिफिक कहाँ है, कहाँ पे बने? पोलन ग्रेन्स. नो, व्हाट हैपेंस, ध्यान से सुनना है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी. कि पॉलिनेशन हुई स्टेमन, ध्यान से देखो, स्टेमन में क्या है? एंथर. एंथर ने क्या बनाए? पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स की क्या हुई? पॉलिनेशन. फिर क्या हुआ है? जर्मिनेशन of pollen grains on stigma of pistil. The pollen grains, यहाँ पे ये देखो, everybody here, सबने इधर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो. इधर देखो, यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंचा, ये पोलन ग्रेन था, ये इसका न्यूक्लियस है. उसके बाद क्या हुई? पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ, ठीक है, जर्मिनेशन हुई. जर्मिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस था, इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म मेल जर्म सेल्स और टू मेल जर्म सेल्स और टू, ये मैं इस तरह से लिख रही हूं, मेल गैमीट्स. हाउ दे आर फॉर्म्ड? दे आर फॉर्म्ड बाय द पोलन ग्रेन. द न्यूक्लियस ऑफ द, दोबारा से, द न्यूक्लियस ऑफ द पोलन ग्रेन divides by mitosis and forms the, हाँ जी, 10th C बेटा, कैमरा ऑन करो, and divides to form the male gametes. दोबारा से यहाँ देखो, germination of pollen grain on stigma. इसके बाद germination के बाद क्या हुआ? pollen grain forms pollen tube,
विच ग्रोज इन, कहां पे ग्रो कर रही है, दिस इज क्या है, ये स्टाइल है, विच ग्रोज इन स्टाइल, ग्रोज थ्रू स्टाइल कह सकते हैं हम, थ्रू है, दिस इज थ्रू स्टाइल, किसकी स्टाइल, ऑफ पिस्टल, यहां पे ग्रो कर रही है। देन द न्यूक्लियस of pollen grain divides to form two male gametes. कहां पे, इन पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स बने, मेल गैमीट्स whatever it is written in your NCERT, that is germ cells, so it is one and the same thing, don't get confused. Pollen tube, what is the function of pollen tube, carries or transports, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जर्म सेल्स और अगेन मेल गैमीट्स, कहां पर, इन द ओव्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके पास लेकर जा रही, ठीक है, राइट डाउन दिस। ध्यान से इसका आंसर सोचकर और मुझे बताना है बेटा। कोमलप्रीत हो गया, हरमन सिंह 10th बी हरमन सिंह, हाँ जी, इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ जी, मैम सेकंड। सेकंड है आफ्टर पॉलिनेशन, बिल्कुल ठीक है बेटा। हमने क्या कहा है, पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंचेंगे, पोलन ट्यूब बनेगी और फिर उसमें डिवीजन होके मेल गैमीट्स बनेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर इज आफ्टर पॉलिनेशन। पहले ये लिख लो, ये क्वेश्चन भी लिखो क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा। Whenever you do it, complete it, raise your hand so that I can know कि भाई ये हो गया सबका।
बातें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल कंसंट्रेशन 100% इधर। डन करें आगे बेटा? यस और नो, रेज योर हैंड्स। यस। So you see that this is pistil. लिखो, a pistil may have one or more than one ovules, या ovary has one or more than one ovules. This is ovary. मैं यहाँ पे हम एक ही ओव्यूल बना रहे हैं, आप मेरे साथ बनाओगे तो it would be better. This is ovule. ओव्यूल के बाहर ये जो है दो, this one and this one, these are the integuments of ovule, because integuments term is given in your book. Integuments means इसकी दीवारें हैं. Integuments are walls of the ovule. Right? Everybody draw it. Inside the ovule, यहाँ देखिए, ये जो खाली जगह है ये सारी किसने घेर ली? This is called as embryo sac, जिसके अंदर एम्ब्रियो बनना है. जैसे हमारी यूट्रस है, सैक है फीमेल्स में, ऐसे ही प्लांट में ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक. ये आपकी बुक में दिया नहीं हुआ, बट थोड़ा सा याद रखो तो बेटर रहेगा. नॉट ए डिफिकल्ट टर्म. एंड हियर दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है तो ये भी दो है, बट आपको ये याद रखना है, दिस इज एग, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल germ cell और फीमेल गैमीट. उसके बाद तीन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और एक स्ट्रक्चर बड़ा सा यहाँ पे. दो न्यूक्लियस है इसमें. बनाओगे तभी पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं करने की जरूरत है. ये सेंटर में ये सेंट्रल सेल, हमने दो चीजें याद रखनी है, सेंट्रल सेल एंड एग, फीमेल germ सेल एंड सेंट्रल सेल. आई होप थोड़ा सा मैं और जूम कर लेती हूँ ताकि आपको और क्लियरली नजर आ जाए.
Done, beta? Now what happened? The pollen tube reaches the ovary and then enters in the ovule. Write down. Pollen tube reaches ovary. Pollen tube ओवरी इधर इधर पहुंची और फिर ये देखो ये पोलन ट्यूब आ रही है ओवरी में पहुंची ओवरी के बाद ये कहां पहुंची इनसाइड ओव्यूल पोलन ट्यूब एंटर्स इन ओव्यूल एंड लिबरेट्स वहां पर छोड़ दिए किनको छोड़ा सिर्फ लिबरेट्स टू मेल जर्म सेल्स इन दोनों को किसमें छोड़ दिया इनसाइड द ओव्यूल एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिया अब मेल जर्म सेल्स ने यहां पे क्या करना है वन मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद एग एग को पता है आपको दैट इज फीमेल जर्म सेल वन मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म जाइगोट फ्यूचर प्लांट है ये one male germ cell fuses with female germ cell to form zygote and second male germ cell fuses with central cell ये आप देख रहे हो ये बीच में ये जो काले वाला है दिस इज सेंट्रल सेल विद सेंट्रल सेल टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू जो किसको न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को ताकि जाइगोट ग्रो करे न्यूट्रिटिव टिश्यू टू मेल गैमीट्स है टू एक्ट्स ऑफ फ्यूजन है एज देयर आर टू एक्ट्स ऑफ फ्यूजन्स therefore it is called as double fertilization जैसे आपने डबल सर्कुलेशन किया था सर्कुलेटरी सिस्टम में दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन दो फ्यूजन्स है एक ने फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज किया एक ने सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज किया बाकी सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती ठीक है तो अब देखो अब ध्यान से देखना कि कहां पे बना ये क्या थी बाहर थी ओवरी ये थी ओवरी द ओवरी वॉल राइपन्स ये जैसे जैसे मैं डायग्राम बनाती हूँ आप भी बनाओगे राइपन्स टू फॉर्म फ्रूट्स
ये है ओव्यूल, यू नो दैट। यहाँ लिखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन या fertilized ovule forms seed. Fertilized ovary forms fruit. Fertilized ovule, unfertilized नहीं, fertilized जिसके अंदर zygote है, embryo है, forms the seed. यहाँ पे लिखिए इंटेग्यूमेंट्स, किसकी इंटेग्यूमेंट्स है? ऑफ ओव्यूल, बहुत क्लैरिटी से, ओव्यूल harden to form seed coat. जो बीज के छिलके हैं वो किसने बनाए हैं? दैट इज ओव्यूल की जो वॉल है, इंटेग्यूमेंट्स है, उसने बनाए हैं। ओव्यूल के अंदर जो है वो क्या था? दैट इज यहां पे क्या बन रहा है? जाइगोट के बाद ये क्या बन रहा है? दिस इज एम्ब्रियो। मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको, दिस इज एम्ब्रियो। और बाहर क्या है? सारा ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है। This embryo is the future plant. This embryo is the future plant. तो अंदर फ्यूचर प्लांट है, उसके बाहर सीड कोट है। देखो कितनी प्रोटेक्टिव नेचर, क्योंकि काम तो सिर्फ किसने करना है? एम्ब्रियो ने, फ्यूचर प्लांट ने, बट नेचर ने कितनी प्रोटेक्शन दी हुई है। बाहर फिर उसके सीड कोट दिया है, फिर उसके फ्रूट बॉल्स भी दी है। रिमेंबर दैट ओवरी, अगर इसमें वन ओव्यूल है तो इट विल फॉर्म वन सीड। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो फ्रूट है, उसके अंदर एक ही सीड है, तो इट मीन्स इट हैज ओनली वन ओवरी, हैज वन ओव्यूल। बट इफ अ ओवरी it has many ovules, it forms many seeds in same fruit या single fruit. एग्जाम्पल लेमन, नींबू में आप देखते हो 3-4 सीड्स मिल जाते हैं। सबसे आ जाता है इंपॉर्टेंट पोमेग्रेनेट, अनार में ढेरों सीड्स है, सीड्स ही तो खाते हैं। हमने ये दिखा दी ओवरी, बट फीमेल में तो स्टाइल भी था, स्टिग्मा भी था। फ्लावर में तो बड़ा कुछ होता है। तो यहाँ पे लिखो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, petals,
स्टेमन, उसके बाद स्टिग्मा एंड स्टाइल। जनरली, सभी में नहीं, जनरली विदर्स ऑफ, विदर्स मतलब टूट जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं। दे जनरली विदर्स ऑफ। लिख लो, इसी में ही क्वेश्चंस आने हैं। विदर्स ऑफ, यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट फ्यू, कईयों में नहीं होते। एक्सेप्ट फ्यू। चलिए, कैसे, हमने क्या कहा, एक्सेप्ट फ्यू का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक्सेप्ट फ्यू, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो टोमेटो, द ग्रीन स्ट्रक्चर सेपल्स आर परसिस्टिंग। brinjal, green structure, sepals are persisting. Strawberry, sepals are persisting. तो लिखो जरा, except a few, such as tomato, brinjal, strawberry, where the sepals are persistent with fruit. persistent means रह रहे हैं, वो विदर नहीं हुए, बाकी सब चीजें विदर ऑफ हो गई। sepals are persistent with ovule. ठीक है जी। नाउ माय क्वेश्चन इज, यू टेल मी, आपने ही मुझे बताया था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन होती है। विच टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन causes more variations you know important for evolution, which causes more variations, differences किसमें ज्यादा होंगे, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन? और मुझे बता रही है जपजीत कौर 10th B, which introduces more variations? क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, बिल्कुल, जितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिक्स करोगे उतनी ज्यादा वेरिएशंस हो जाएगी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं, दैट इज द जाइगोट। हमने कहा जाइगोट, द जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो, राइट? सो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में क्या चीजें हैं, बस ये देख लो। You can see this, that embryo consists of cotyledons. ये दो cotyledons हैं, I'm sorry. These are two cotyledons, then plumule and then radicle. हम थोड़ा सिंपल सा बनाते हैं कि these are cotyledons. ये वाला डायग्राम बना लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। This is plumule,
these are cotyledons and this is radicle. This is embryo surrounded by the seed coat. The plumule, it forms future shoot. Future shoot means stem and leaves in plant. The radicle, write down, ये functions आ जाते हैं. Radicle forms roots of plant. And cotyledons form first leaves of the, जो पहले दो पत्ते बनते हैं वो cotyledons बनाते हैं. बाकी leaves कौन बना रहे हैं? Plumule. Cotyledons form the initial two leaves of the plant. Right? So this is all about reproduction in plants. And the students who have now fully understood it, raise your hands. जल्दी से हाथ खड़ा करो जिसको समझ आ गई है. नहीं तो आज हम सारा दिन यहाँ बैठेंगे. 2 बार 3 बार 4 बार दोबारा से ये करवाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जल्दी से 10th A टीचर्स प्लीज, ये सुस्त से बैठे हैं, हाथ खड़ा करने में क्या मुश्किल है? जल्दी से हाथ खड़ा करो जिसको समझ में आ गई है. देखो उधर वाली क्लास में तो हो गए. 10th C में नहीं पता चला बच्चों को. मैम इनको नहीं पता. चलो 10th A हैंड्स डाउन. 10th C वाले अभी भी नहीं. मैम फिर मैं इनके प्रिंसिपल से बात करती हूँ, फिर हम इनकी एक एक्स्ट्रा क्लास आज फिर रखते हैं. ठीक है? ओके बोलो. हाँ जी, बॉयज को समझ में आई कि नहीं? मैम ने पढ़ाया, तुमने कहीं ट्यूशने भी पढ़ी होगी, आता तुम्हें फिर भी नहीं था, है ना? स्टेमन और पिस्टिन में तुम कंफ्यूज थे. बॉयज को समझ आई तो बेटा जल्दी से हाथ खड़ा करो, जल्दी से. स्टेमन पिस्टिन पता चली? वेरी गुड वेरी गुड. 10th वाले बड़े ढीले हो जाते हैं. हैंड्स डाउन. कितनी एनर्जी हमारी हाथ खड़ा करने में ही लगा देते हो, इतनी ना किया करो. ठीक है? चल ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू. इसका हम एक टेस्ट बना के आपकी मैम को भेजेंगे ताकि आपको याद होगा. दोबारा से रिवाइज करोगे, फटाफट हो जाएगा. बस गिव मी 1 minute फॉर योर मैथ्स क्लास. Students, Good morning, sir. morning to the teacher present. Yes, students. So in the previous class, we have done the assignment on trigonometry. We have done till question number 11, students. Yes. Any doubts till number 11? Any doubts, students? Yes, students. Any doubts? Okay. So I think ma'am has given you assignment to do till question number 16. Have you people done? बच्चों कर लिया आप लोगों ने क्या? Sir, yes. Yes. Okay. Please raise your hand जिन बच्चों ने कर लिया है. Please. जिन जिन बच्चों ने 16 तक की है, please raise your hand. Raise your hand if you have done. No one? Antikas? Ma'am, please count in both the classes how many students have done. All the 3 classes, right? So section A. Ma'am, please tell me how many students have done. I think I can see only 3-4 hands. Yes, sir. Only one student have done. Only one student. बच्चों एग्जाम इसी साल देने हैं ना? हाँ जी. 25-26 सेशन में देने हैं या नेक्स्ट सेक्शन की प्लानिंग है? बच्चे दिस इज वन ऑफ द सो कॉल्ड डिफिकल्ट चैप्टर. और डिफिकल्ट बच्चों को इसलिए लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते. दिस चैप्टर रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस.
unless or until you do too many questions so that you are familiar with the concepts, you won't be able to feel comfortable in this chapter. But आप लोग effort नहीं कर रहे हो, right? अभी आपको जो मिड टर्म से पहले आपको टाइम मिल रहा है, उसके बाद आपको टाइम भी नहीं मिलेगा बच्चों. आफ्टर सितंबर यू हैव अक्टूबर नवंबर, उसमें आपके टीचर्स ने सारा सिलेबस फिनिश कराना है. देन दिसंबर जनवरी यू विल हैव प्री बोर्ड्स. अगर अभी आप टाइम नहीं यूटिलाइज करोगे तो देन यू विल बी इन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. हाँ जी, 12 क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया? प्लीज रेज योर हैंड. और जिन जिन्होंने भी किया है प्लीज कम टू द माइक. 12th क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी किया प्लीज कम टू द माइक, वेदर इन सेक्शन ए बी और सी. प्लीज, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, whoever has done it, जल्दी से माइक पे आ जाओ जरा. सेक्शन ए में कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने किया है? आ जाओ जरा, माइक पे खड़े हो जाओ बेटा. हाँ जी, सेक्शन बी एंड सी. व्हाट इज गुड नेम स्टूडेंट? Manekil. हाँ जी, आपका बेटा सेक्शन. हाँ जी, प्लीज रिपीट. ओके, दिस क्वेश्चन. Yes. टेल मी व्हाट यू हैव डन बच्चे. इट इज गिवन 3x इक्वल टू secant square secant theta and 3 by x equal to 3 by x equal to tan theta, right? So you have to find 9 times x square minus 1 by x square. Just tell me students what you have done. So in first equation, firstly we have to do squaring on both sides. Right, we have done the squaring on both sides. What it becomes? Then it forms 9x square is equals to sec square theta. Right. Then we have to do the same in the second equation. हाँ जी, आप बताइए बेटा सेक्शन बी वाले स्टूडेंट्स, बी और सी. हाँ जी, So I have done x is equal to sec theta upon 3 वेरी गुड. x equal to क्या? x equal to sec theta upon 3. Very good. Then and 1 upon x is equal to tan theta upon 3. tan theta upon 3. Very good. Then We will put x square and is equal to x sec theta upon 3 का whole square right, theta upon 3 whole square. is equal to sec square theta upon 9, right? Yes. And then And 1 upon x square is equal to yes, tan square theta upon 9. tan square theta, right? Okay, then Now we will take the common 9 from the whole equation. 9 from which equation? So 9x square minus 1 upon x square. It's already common given है बेटा. This is already common. You just need to put this value of x square here and 1 by x square here. And 9 cancel out Yes. the numerator and denominator. Right. So students, what you please sit down, all of you. See what you have to do. He has very rightly done this. This is also correct. The student from section A has done 9x square equal to secant square theta, and similarly you can squaring this also. 3 by x whole square will become 9 by x whole square equal to tan square theta. This is clear. So both the things are okay, right? Concept is same, थोड़ा सा different है करने का way. Now what you can do now, if you are doing by this way, what you can do, you can multiply by 9 to the entire. What you can do, you can multiply by 9. You got this thing. So you have value of 9x square also. What was the value of 9x square? Secant square theta. And what was the value of 9 by x square? Tan square theta. And this value is, because this value come from
The second identity we have done 1 plus tan square theta. When you transpose tan square theta on the left side, it becomes minus. So hence secant square theta minus tan square theta equal to 1. So the answer will be 1 for this question. Is it clear? Is this clear, students? Yes. If you have done like the way the student has done, you just need to put here the value of 9 into x square. That is secant square theta by 9 minus tan square theta by 9. So here when you will take LCM, 9 will be cancelled out. So one and the same thing. So both the way the question is correct. This is clear, students? Yes. Any doubt in this question, बच्चों? चलिए. We move to the next question. Hence the answer will be D option. Right? Now we move to the question number 13. 13 is very simple question. This type of question you have done in your NCERT book also. How many of you have done this question? Speak up. How many of you have done? Please raise your hands. Only one student. Please do this question yourself. What you can do? Tan theta equal to 4 by 5. Now by using Pythagoras theorem, you can find out the value of sin theta and cos theta. Can you do this now? Yes. You just need to draw the right angle triangle. What is tan theta in terms of sides of the triangle? P upon B, that is perpendicular upon base. So therefore, perpendicular will be 4K, right? Even 4 by 5, no? Yeah. So now you can find out the value of hypotenuse. Please find the value of hypotenuse. Yes, tell me what is the value of hypotenuse, students? And cos theta. Then put all the values. Hurry up. Apply Pythagoras theorem, students. बच्चे 10th क्लास में हो आप इतना टाइम लगाओगे कैलकुलेशन में so I will be able to finish your paper. अब तो ये बड़ी सिंपल कैलकुलेशंस है जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे जाओगे देन यू विल रियलाइज कि व्हाट इज कैलकुलेशंस. हाँ जी, ओंकार सिंह फ्रॉम सेक्शन सी. हाँ जी बेटा, हैव यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? करने कितनी देर तक चलेगा बेटा? हाउ मच टाइम यू रिक्वायर? Sir, h equal to under root 41. कैसे आया बेटा अंडर रूट 41? अपनी नोटबुक देख के बताओ. जस्ट लुक एट स्क्रीन. Sir, 4 का square plus 5 का square equal to 16 plus 25 equal to under root 41. अंडर रूट 41, राइट. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बस छोड़ दो उसको. ये अंडर रूट 41 आ गया. 41 के. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा? 1 over 7. क्या जी? 1 over 7. 1 over them. What he is saying? 1 over 7. So he is saying 1 over 7 overall answer. Overall answer नहीं बेटा. I am just asking what is the value of cos theta. बोलो. Hurry up.
कब? आंसर तो वो साथ वाले की नोटबुक से देख के बोल दिया मैम इसने. आई नो. कॉस की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? What is cos theta? Sit down. Sit down. अकॉर्डिंग Student, sin theta is perpendicular upon hypotenuse. What is perpendicular here? 4k. Upon hypotenuse is under root 41k. So k will be cancelled out. This will be 4 by root 41. Now what will be cos theta? B over h. What is B? 5 That will be pi by. under root 41. Now put these two values in the question. So when we put these two values, 5 into sin theta. What is the value of sin theta? 4 by root 41. Value of cos theta. 5 by root 41. Similarly, 4 by 41 plus. Right, students? Yes. Now, how to solve this? Solve कैसे करना? Very simple. Take the LCM. Both the denominator and the numerator have. The denominator has 41 root. So this will become 20 minus 15 over 20 plus 15 divided by root 41. This 41 root will be cancelled out and it left 5 over 25. which is equal to 1 upon 7. 1 by 7. Right, students? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Value of tan theta increases faster than sin theta as theta increases. Now just understand this thing. What he is saying, the value of tan theta increases faster as tan theta as compared to sin theta as theta increases. Now first of all you tell me how many of you have understood this question. कितने बच्चों को समझ आया? What is the value of sin theta at 0 degree? What is the value of sin 0 degree? 0. 1 upon 2. 45, 1 by root 2. then 60 3 by 2. and 90. 1. Now compare tan. What is the value of tan 0 degree? 1. 0. Is the values? Yes. Now, when the theta increases means when theta is increasing. So first is equal. Tell me whether 1 by 2 is greater or 1 by root 3 is greater. 1 by 1 by root 3 greater होता है. What is 1 by 2 0.5. and 1 by root 3? This becomes 1.732. How much? Denominator is smaller. So therefore answer will be greater. बेटा 2 greater है या 1.732 greater है? 2. जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो ओवरऑल वैल्यू इज लेसर. So therefore this is lesser, this is greater. 1 by root 2 and 1. So obviously 1 is greater. So means tan theta is Increasing. faster. So this statement is True. next question. The value of sin theta plus cos theta is always greater than 1. Is this true? False. False. So what will be the right answer? Can you tell me why it is false? Can you tell me why it is false? Yes? Can you tell me why it is false? बेटा simple है. What is the value of sin 0 degree? 0.
What is the value of cos 0 degree? So now in this case, sin theta plus cos theta is 0 plus 1, that is 1. But he is saying always greater than. So this is false, right? So therefore the choice will be C option. Now comes to the question number 15. If x sin cube theta plus y cos cube theta equal to sin theta cos theta and x sin theta equal to y cos theta. Have anybody done this question? किसी बच्चे ने किया है क्वेश्चन जी? See how we have to do this question. X sin cube theta plus y cos cube theta is equal to And the last and these two things are given. We have to check whether x square plus y square is equal to 1. So we have to solve this. How to do this, students? Now it's a very simple thing. What you can do, you can convert first equation in sine or cos form. Okay, either sine or cos. Now what we can do, if you solve this, find the value of sine theta from here. What will be the value of sine theta? Y by x cos theta? Yes or no? Put this in the equation 1. If you put it here, what it becomes? In place of sine theta, you are putting x into y cube over x cube. Clear बच्चों? Is this clear or not? साइन थीटा का क्यूब किया हमने तो इस टोटल का क्यूब हो जाएगा y क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा प्लस y cos cube theta equal to, here also put the value, that will be, is it clear बच्चों? Is it clear or not? So this one power will be cancelled out. What you got here? y cube upon x square cos cube theta. Cos cube theta हम कॉमन ले सकते हैं बच्चे? चलिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं. What you are left here? Y equal to. Is this clear बच्चों? Yes or no? Yes. Now, but you can cancel out. Is this clear? Yes. What you are left with? इसको आगे सॉल्व कीजिए. LCM ले लिया बच्चों. Y cube plus equal to y by x. Is this clear? Into cos theta is also there. Anything not clear till now? बेटा ये स्टेप समझ आया? नहीं आया? क्या डाउट है बेटा इसमें बताइए? We have just taken the LCM y cube plus x square y into cos theta, right? Equal to y by x. देखिए नेक्स्ट पेज पे. This was the equation y cube by x square plus y is equal to y by x cos square theta. Is this clear, students? Yes. Now this is cos cube, this is cos square. Cos square cancel हो जाएगा बेटा. So we are Cos theta. हमने LCM लिया.
right? Yes. This x will be cancelled out. 1x. So what we are left with? Cos theta by q plus Y square plus x square upon. Is this clear? Any doubt till now? yes. So this will be cancelled out. Yes. Now we are left with x square plus y square is equal to x over cos theta. Right, students? So we have got this value. So therefore, this is true or false? Anji? How it is true? We got x square plus y square equal to x by cos theta. We were supposed to prove x square plus y square equal to 1. False हो गया ना बेटा ये? Yes. So this will be false. And second reason is sin square theta plus cos square theta equal to 1. So that is true. That is true or not? So therefore the answer will be D option. Is this clear? Next question पे आ जाते हैं student 16. Sin theta is the product of sin and theta. Is it true or false? Beta sin theta is product of sin and theta. False. Beta do sin have some meaning? If Yes. theta not attached to it, does it have some meaning? Beta sin theta have only meaning if we have some angle with it. Since theta is the angle, so therefore sin theta is not the product of sin and Theta. theta. So therefore this is the reason part. The value of sin theta increases as theta increases. Yes. True. पीछे देखा था बेटा कि sin theta keeps on increasing if the value of theta increases. So turn back. Now comes to the proving the questions. Questions, students. First question you can try yourself. This is NCERT question. Can you try this question? Yes. Or shall I explain? देखिए बच्चों, this is one of the most important question in trigonometry, right? तो आपकी जो book में example 12 है, the same question is this one, but only thing is that question is starting with sin and cos. Here it is already given in the form of tan theta plus secant theta. See how to do this question. Tan theta plus secant theta minus 1 over Solve this question, hurry up. only students. How many students know how to do this question? Please raise your hand. Raise your hands. How many knows? None of you in both all the three sections. Not even single student. Okay. See how to do this. First take the left hand side. You have to remember this first step. Just see carefully. We have done this formula. Have we done? Yes. Now just see carefully. You replace this one by this formula. And you have to apply this formula in only numerator, not in denominator. Just apply this formula in numerator. See how we can do this. Hurry up. Tan theta plus secant theta. Always keep this in bracket.
Otherwise, you will make a mistake. Is this clear, students? Yes. Is this step clear to you or not? Yes. This is the main step. After this question is very simple. Just you have to do the simple calculations. This step is clear to everyone? Yes. Now move to the next step. We have tan theta plus secant theta. Now in this, can we apply a square minus b square identity? Yes. Apply that identity. Right? So this becomes, keep in bracket only, secant theta plus tan theta into, right? Keep this in bracket also. Now it is tan theta minus anything not clear till now? Any step, students, not clear? No. Now what we shall do? What we shall do now? Just look carefully and tell me. Can we take in the numerator tan theta plus secant theta common? Yes. So क्या please, इसमें से? please take this common. So bracket. So when you take common from the first term, what will be left? 1. 1 minus, keep this in bracket only. Is that clear, students? Right? Now, when you open this bracket, what this becomes? What this term becomes? Minus sec theta plus tan theta. हम यहीं पे इसको कर दें अगर 1 minus sec theta plus. Now this term and this term both are same. Yes. Yes or no? Yes. We cut out this. What we are left with? Is this clear, students? Yes. Just convert in sine and cos. Your answer is there. Is it clear? Is this clear? Yes. Is the LCM? You have reached your destination, है ना? Yeah, now this was the question. Yes. Have you understood this? Just have to remember one step. In the place of 1, you have to replace 1 by secant square theta minus tan square theta. After that, a square minus b square and taking the common factor. Then everything is done. This is clear? Same question is there, students, with cosecant theta and cot theta. There, in place of 1, you have to apply cosecant square theta minus cot square theta. आपकी बुक में है ना, जो लास्ट क्वेश्चन का आई थिंक 5th पार्ट है, जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है ना, 5th पार्ट है आई थिंक उसमें cosecant theta cot theta, right? So that is the same question, you can do that. Anything not clear in this question? Anything, students, not clear? आप लोग yes no कुछ नहीं बोल रहे हो. Why so? Why are you not responding? बच्चे अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज रिप्लाई. I can once again explain this. But this is a really important question. You should know by heart. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर आप नहीं बोलते तो. क्वेश्चन नंबर 2. sin 6 theta plus cos 6 theta 1 minus 3
Sine square theta cos. If we have to prove sine 6 theta plus cos 6 theta equal to 1 minus 3 sine square theta cos square theta. Right, students? Yes. Now, what we can do here? Can we apply some identity here? Can we apply some identity in the left hand side? Can I write it like this? Can I write it like this? Yes. Now, which identity we can apply here? A cube. A cube plus B cube. What is A cube plus B cube, students? Who will tell me? Please raise your hand. Anyone? No talking. Please, if you know, please raise your hand. Nobody knows. Ma'am, we have done these identities in 9th standard also, and in the beginning also, 10th class we have done. Yes, sir. They have done all the identities, but now they are not responding. Beta, speak up. Have done all kind of identities. Actually, you should know these are the basic things. Then how will you do the is A plus B, right? Minus, right? This is an identity, students. A plus B, A square minus AB plus B square. So now we'll apply this identity here. Now what is your A? A is our sine square theta. B is cos square theta. So this will become now square of A, yani ki square of sine square theta. That will be sine 4 theta minus sine square theta cos square theta plus this step clear, students? Yes. Now what will be the next step? This will become, 1 so what we are left with? sine 4 theta. Plus cos 4 theta. Now what we shall do? What is the identity for A square plus A plus B whole square? A square plus B square plus 2AB. Plus 2AB. Can we write A plus B whole square minus 2AB equal to? A square minus. Now, can we apply this identity here? A square plus B square equal to A plus B whole square minus 2AB. Now, this is A square, this is B square. Can we apply the identity in this? So what this becomes? A square plus B square. मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो लेटर ऑन. Can I write it like this? I have rearranged the terms. Have you understood? I have written cos 4 theta, then minus sine square theta cos square theta. Is this step clear, students? Yes. Now apply that identity. So what we can write? Sine theta plus Cos square theta का whole square. cos square minus 2 sine theta Cos square theta. minus. Sine square theta cos square theta. Is this step clear, students? Yes. Now this will become 1 minus 2 minus 1. It will become 1. 1 नहीं बेटा minus 3. So which is equal to? Have you understood the question? Yes. So you wanna note down?
नोट तो नहीं करना बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Sir, next period has started. Next period started. Okay, students, we'll continue this assignment in the next class. So thank you very much for joining. Thanks a lot, teachers.